from 2000, I have climbed, me and my group, we have climbed 6 mountains of 6,000 meters. Some we have dedicated to the big figure of Pakistan, like Jinnah, Mohammed Jinnah, the first president, and Iqbal Peak of 5,800 meters, the great poet and Pakistan. scholar, and other we have used local name like Karka, High Peak. Of these 6 mountains, we have of these 6 mountains, 5 was unclimbed, never has touched the summit, and 4 without name. And so, in the first initial period, we have dedicated to our Club Alpine in Italy. So, but Cima Marostica, Italia Peak, and Renato Casarotto Core are very beautiful mountaineer objective, also for the passionate of mountaineering. So we are happy of being this. Peshawar. But the road built in 1952 via Babusar Top, it means we were cut off from the rest of the world. Therefore, we are very unique, but we are very backward people. And we are very thankful to the Western nations, European nations, and North American nations who are helping us via non-governmental organizations, particularly Akhan Network and other organizations and the government of Pakistan, who are helping to develop these areas. Our country is not stable still. Therefore, we are facing too much troubles in our areas. But your noble cooperation and your noble work for us. लेकिन हमें मायूस इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे पीछे ताजिकिस्तान की तरफ या सेंट्रल एशिया की तरफ किसी दूसरे मुल्क की तरफ कोई रोड नहीं बन सका, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान के लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैं आपका नुमाइंदा होते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ। मसलन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, लेकिन ये वक्ती है, ये ज़्यादा 1 साल लगेगा, 1.5 साल 2 साल लगेंगे। काम भी हो रहा है, पैसे भी मौका से, काम होते होते वक्त लगेगा, तभी जाके चुन इस इलाके के अंदर भी वो पीक्स जो है वो दरियाफ्त होंगी, वो ग्लेशियर्स दरियाफ्त होंगे, वो टूरिज़म के जितने भी लवाजमात और ज़रूरियात है वो हमारे इलाके में भी है, इसी इश्कोमन में है और इसी दरकुत तक जो हमारा कुरुम्बर वैली है उसके अंदर है। तो हम समझते हैं कि इस इलाके के अंदर इसी तरह ही एक डेवलपमेंट अचानक सा होगा, जिसका हमें न सिर्फ उम्मीद है बल्कि यकीन है। लेकिन उसमें एक बात जो बहुत अच्छी तरह याद रखने की ज़रूरत है कि आपने अपनी ज़मीनों को नहीं बेचना है। आप ये समझे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा लाया जाएगा, क्योंकि हम एक गरीब इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। पहले ज़माने में चूँकि पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, तो ये लखपति करोड़पति बहुत बड़ी कोई चीज़ होती थी। अब करोड़ों रुपया कोई चीज़ नहीं है। आपके लिए 1 कनाल ज़मीन करोड़ रुपया नहीं ला रहा है, वो आदमी आपके लिए आपकी नस्लों को तबाह करने का वो एक बम ला रहा है। उसको करोड़ रुपया न समझे, बम समझे। और यही समझ के इस इलाके के अंदर अपनी ज़मीनों की हिफाजत करनी है, अपने वसाइल की हिफाजत करनी है। एक मरतबा ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगे तो फिर दोबारा आप इनको हासिल नहीं कर सकते हैं। ये मेरा आपके लिए पैगाम है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं that her beautiful soul is around us today especially, and it will be a so beautiful soul. I hope so that definitely the soul is around us under the shadow of
this mountain range particularly, and the lakes, Atal Lakes, and the other lakes which are situated over here. So once again, I am thankful to the family of Christina that you have identified the burning issue of mountaineers in Gilgit-Baltistan in general and in particular in district Ghazir. तकरीबन 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट को हमने टेक ओवर किया था और 3 साल में ये प्रोजेक्ट इटली में डिज़ाइन हुआ है। हम 3 इंजीनियर्स हैं, हमारी कंपनी का नाम है रीच इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने ये जो प्रोजेक्ट है क्रिस्टीना सेंटर की कंस्ट्रक्शन में हमारी कंपनी है। The inauguration of this center in Kinnerley. I have and with me all my family. I think the center is very important for the local people and but for all people that want to stay in peace all together and in love with the mountain. जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से तो ये प्रोजेक्ट आज जिसका हमने इनॉग्रेशन सेरेमनी सेलिब्रेट की, ये 3 साल पहले हमने टेक ओवर किया था। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की। ये डिज़ाइन इटली में हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने करना था, वो सारे करके हमने आज इस प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर, जो कि इस रिमोट एरिया में रियलाइज़ करना उनके ड्रीम को काफ़ी मुश्किल था, तो हमने 3 साल के अरसे में आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हमें फील हो रहा है कि हमने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया जो इतना ईजी है। Inauguration ceremony today we have almost 60 guests from Italy and the event went also well. So we have delivered the project and today is very important day for us. We wish and hope that the community of Kotosi will take advantage of as much advantage as they can from this. Materialized vision, and today we are in the opening ceremony of achieving this vision of promoting tourism in Gilgit-Baltistan. I also pay gratitude to the Italian government, delegates from Italy, Mr. Tarciso Bello, his team, and all the people who have put their efforts to promote this great vision and to promote tourism in our valley, Gilgit-Baltistan, particularly in Ishkoman Valley. And I would also like to request our representative in the assembly to help us in promoting tourism, and the Deputy Director of Tourism and his team to help us promoting tourism in Ishkoman. We are blessed with mountains, we are blessed with glaciers, we are blessed with rivers, we are blessed with natural resources in this beautiful valley. What we need to do is to protect all this and to preserve it. I would also request the local community to preserve this center, to have the ownership of the center. This is for the community. This is wholly solely the property of the community. Now, our unity, our commitment, and our hard work to help this team who has initiated this great initiative. लोकल कम्युनिटी की ताउन की वजह से मेरा यहाँ आना प्रोजेक्ट का इख्तिताम नहीं बल्कि एक इब्तिदा है। जो कि अल्पाइन क्लब चाहती है आने वालों सालों में पेश करती रहे, और इस प्रोजेक्ट की इब्तिदा जो है आने वाले वक्तों में, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन। एंटोनियो मोंटानी, प्रेसिडेंट अल्पाइन क्लब। हमारे इटालियन फ्रेंड्स की जो तारीख़ है ये 1997 और 2000 से अब तक एक्सपीडिशन के मामलात में और क्लाइंबिंग के हवाले से ये सिलसिला जारी है। हिस्ट्री है कोटोल की और इटालियंस की, और इस हिस्ट्री के पीछे हमारे खूबसूरत पहाड़ हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अटल लेक, दरकुट पास, असुम्बर पास के साथ साथ अटल लेक में 6,000 से ज़्यादा के छोटे छोटे पीक्स हैं जिनको इन जो हमारे इटालियन क्लाइंबर्स ने सर किया हुआ है। लेकिन इसके पीछे इनकी एक मोहब्बत है इस जगह के साथ।
گاؤں کی کوالٹی آف لائف کو دیکھتے ہوئے، گاؤں کے لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ہاسپٹیلٹی جو ان لوگوں نے اٹالینس کے ساتھ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے۔ 2007 میں سب سے پہلے انہوں نے ہمیں صاف ستھرا جو پینے کا پانی تھا وہ دے دیا، اس وقت پانی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر انہوں نے دے دیا، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے یہاں پہ ہمارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بچوں کے حوالے سے ان کی جو اسسٹنس تھی وہ جاری رہی۔ لیکن جو کور پرپس آج کے اس ایونٹ کا تھا، کرسٹینا کستانا کمیونٹی ہاؤس اینڈ کلائمبنگ سینٹر، ان کی ایک اٹالین کلائمبر تھی کرسٹینا کستانا جس کا نام تھا، 2009 کو براڈ پیک پہ ایکسپیڈیشن کے دوران وہ ایکسپائر ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کی یاد میں انہوں نے یہ سینٹر بنانا تھا۔ تو اس سینٹر کے حوالے سے میرے ساتھ ان کی انٹریکشنز تھی، تو اس انٹریکشنز کے حوالے سے اس گاؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے اٹلی جانا پڑا، اس گاؤں کو انٹروڈیوس کروانا پڑا، اور ہمارے ان دوستوں کی مدد سے اٹلی میں بھی ہم نے ان تمام چیزوں کو، اس خوبصورتی کو، اس نیچر کو ہم نے جب انٹروڈیوس کروایا تو اس کے بعد ان کی انکلائنیشن، ان کی محبت گاؤں کے لیے بڑھی۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے اس کے نام پہ یہ کرسٹینا کستانا کمیونٹی ہاؤس اینڈ کلائمبنگ سینٹر اسٹیبلش کیا۔ مین وائل ہمارے پاس جو گورنمنٹ کی برج تھی BNR کی، وہ جب کریش ہو گئی تو اس پر بھی اومبا فیکٹری اٹلی کی جو ہے انہوں نے اسٹیل برج ڈونیٹ کیا، جس کے لیے جب میں اٹلی میں تھا تو اسی دوران بھی ان کی فیاضی اور جنروسٹی کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا، انجینئرز آئے، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کی انتھک کوشش، محنت اور ان کی تعاون کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ کمیونٹی کے نام پہ سینٹر انتقال ہے گورنمنٹ کے اندر، کمیونٹی کے سینٹر ہے، ان کی اسپانسرشپ پہ یہ بنی اور آج انہوں نے کمیونٹی کو حوالے کیا۔ اس کے بعد اس کی جو ہے یوٹیلائزیشن ہوگی اٹلی کے دوستوں کے ساتھ کلائمبنگ کو پروڈیوس کرنے میں، کلائمبرز کو ٹرین کرنے میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گا، لیکن اس کا اکنامک جو امپیکٹ ہوگا وہ ڈائریکٹلی کمیونٹی کو ہوگا۔ اس میں ہمارے ان تمام دوستوں کا، حکومت وقت کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور تمام پاکستانی اور فارنر کلائمبرز کے ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس خواب کو پورا ہونے میں ہماری مدد کی، اور آپ سب کا اور آپ کے تعاون کا